Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Please let me know in the comment box if I am audible to you. Chalo. Good evening to all. I hope I am audible to you. Let me know in the comment box, please. Yes, anybody, if I am audible, please let me know in the comment box. So in the previous few sessions, we have seen our hormonal system from anatomy physiology point of view, right? So in that, what we have seen? We have seen the hormonal system from HAP point of view, anatomy physiology point of view. In that, we have seen the different organs, their hormones, their functions, right? We have seen the hypothalamus, pituitary hormones, their regulations, etc. Thyroid hormones, adrenocortical, adrenal hormones, etc. In the last lecture, we have finished it. There, I have also explained you about their diseases, right? We have seen their diseases and all that, right? Pancreatic hormone and all that. Now, today we'll see the thyroid hormones and their drugs. Okay, good evening. So today we'll see about the pharmacology of these drugs related to hormones. Drug acting on hormonal system, and today we'll see first of all anti-thyroid drugs, right? So जो भी हार्मोन्स देखे अपन ने, हार्मोन्स इन जनरल, देयर ऑर्गन्स, देयर उसके बाद में पूरे पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखे, उसके बाद में थायराइड हार्मोन्स देखे, उसके बाद में एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन देखे, या फिर लोकल हार्मोन्स के बारे में अपन ने HAP में पढ़ा है, राइट? सो आउट ऑफ दैट थायराइड हार्मोन्स and drug acting on that is known as anti-thyroid drugs. So today we'll see that anti-thyroid drugs, right? We'll see the anti-thyroid drugs first, and tomorrow we'll see the drugs of anterior pituitary and its analogs. So first of all, anti-thyroid drugs. So we know that thyroid hormones, they are produced by thyroid gland under the influence of pituitary gland and hypothalamus. So there are two hormones. First of all, first hormone is known as a T3 and second is a T4. T4 is known as a tetraiodothyronine. T3 is known as a triiodothyronine. These are the two hormones of thyroid gland and they are important for metabolism. T3, T4. T4 means tetraiodothyronine and T3 is a triiodothyronine. What are the functions? We have already seen, but I would like to repeat it in a short. So they are very important for your growth and development. So normal growth and development is under influence of T3, T4.
जो आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके अंडर में होता है, T3 T4 के अंदर. So thyroid hormones are responsible for the normal growth and development of body. Now we have already seen in the thyroid hormones. So deficiency of thyroid hormones leads to cretinism in the children and maxedema in the adults. थायराइड हार्मोन्स जो मेटाबॉलिज्म करता है, आपके बॉडी का रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है. एंड थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी इन द चिल्ड्रंस लीड्स टू क्रिटिनिज्म एंड मैक्सिडेमा इन द अडल्ट. डिफिशियंसी अगर होगा तो क्रिटिनिज्म होगा चिल्ड्रंस में और मैक्सिडेमा होगा अडल्ट में. उसके सिम्टम्स वगैरह आपने ऑलरेडी देखे हैं. ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, एज आई टोल्ड यू, दे इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म. So thyroid hormones increases the metabolism of carbohydrate, and that's why they increases the blood sugar level. So they can be called as a hyperglycemic hormone. Then also they increases the metabolism of protein, lipids. Protein का metabolism increase करते हैं, mostly catabolic in nature. Mostly these are catabolic in nature. So catabolic means they will break down the proteins. And protein का breakdown होगा तो क्या होगा? Weight loss होगा. So increases the metabolism of carbohydrate, and because of that hyperglycemic effect is there. Increases the metabolism of protein, that's why weight loss is there. Also increases the metabolism of lipid, means catabolism of lipid. So lipid का breakdown करते हैं basically, and that's why you know lipid is nothing but the esters of fatty acid with a glycerol. तो अगर breakdown होगा तो क्या होगा? Free fatty acid will be released. So free fatty acids will be released in the blood. Third function of your thyroid hormones, they increases the basal metabolic rate, BMR. So they increases the BMR. BMR means what? Basal metabolic rate. Means it is nothing but the how many number of calories are consumed by your body during the rest. आप normally कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कुछ एक्टिविटी चल रहा है, उसके लिए एनर्जी लगता है. तो नंबर ऑफ कैलोरीज इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज एट रेस्ट, मीन्स द BMR. बेसिकली thyroid hormones increases the BMR, okay, and that's why in a hyperthyroidism there is a heat intolerance, and in the hypothyroidism there is a cold intolerance. अगर thyroid hormone ज़्यादा हो गया तो heat intolerance होता है क्योंकि BMR बढ़ जाता है, और अगर hypothyroidism है, कम है thyroid, उसमें cold intolerance होता है, cold intolerance. ठीक है. Now also these thyroid hormones stimulate your cardiac system. They stimulate the heart, increases the heart rate, contractility, and cardiac output of your heart. They causes the, है ना, so they causes the stimulation of your cardiovascular system, cardiac system. They increases the heart rate, contractility, and cardiac output. Therefore, in case of hyperthyroidism, जहाँ पे hyperthyroidism होता है उसमें थोड़ा बहुत एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में. ठीक है. नाउ अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट्स इन द मेंटल रिटार्डेशन. अपन ने देखा है क्रिटिनिज्म इज वन ऑफ द एग्जांपल. So in case of cretinism there is a mental retardation we have seen. So hypothyroidism result in the mental retardation, and hyperthyroidism result in the anxiety, tremors, nervousness, and excitability. Okay. Now normally the T3 and T4 they are secreted by thyroid gland in the blood, and normal secretion कितना होता है उसका? So around 70 to 90 microgram of T4, around 70 to 90 microgram of T4 is secreted daily, right? And 15 to 30 microgram of T3 is secreted. The T4 and T3, so tetraiodothyronine and triiodothyronine, but the active form is a T3. एक्टिव फॉर्म जो होता है उसका T3 होता है. तो ट्राइआयोडोथायरोन इज एक्टिव फॉर्म. तो इन द ब्लड इन द पेरीफेरी T4 जो है टेट्राआयोडोथायरोन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू T3. मोस्ट ऑफ द T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 बाय इन द पेरीफेरल टिश्यू. T3 T4 से बनता है, याद रखना है. नाउ वी हैव सीन ऑलरेडी द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. So regulation of thyroid hormone secretion, there is a regulation of T3, T4 is under the two control. First control
is a pituitary, that is a major control. Second one is the hypothalamus. ठीक है, so hypothalamus, if there is a decreased thyroid hormone production in the body, hypothalamus will release a thyrotropic releasing hormone, will produce a thyrotropic releasing hormone, right? Thyrotropic releasing hormone will act on that anterior part of pituitary, and to produce, it will stimulate the pituitary to produce the thyroid stimulating hormone. मतलब अगर आपके बॉडी में T3 T4 लेवल कम है, if there is a low level of this T3 T4, hypothalamus will release one hormone, that is a TRH, that is thyrotropic releasing hormone, and that will stimulate the anterior pituitary to produce a thyroid stimulating hormone. And ये thyroid stimulating hormone will come, it will act on a thyroid gland and will increase the production of T3 T4. जैसे ब्लड में T3 T4 नॉर्मल हो जाता है, तो वो सिग्नल नॉर्मल जैसे हो जाता है, दैट सिग्नल इज इनहिबिटरी सिग्नल टू द TSH and as well as inhibitory signal to the hypothalamus, and that is known as a negative feedback mechanism. We have already seen most of the hormones they are regulated by negative feedback mechanism. क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, most of the hormones they are regulated by negative feedback mechanism, but there is one hormone oxytocin which is regulated by positive feedback mechanism. तो आपको याद होना चाहिए कि सभी जो anterior pituitary hormones है, most of them they are regulated by नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. जैसे कम हो गया हार्मोन, जैसे थायराइड हार्मोन कम हो गया, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है. कौन सा? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. वहाँ पे इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड एंड विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ T3 T4. जैसे ही ब्लड में T3 T4 बढ़ गया, नॉर्मल हो गया, वो सिग्नल, दैट इज इनहिबिटरी सिग्नल फॉर द रिलीज ऑफ TSH, also release of TRH, है ना. That is known as the negative feedback mechanism, right? We already seen. Now thyroid hormones, that is a T3 and T4, they are used in the which condition? Obviously अगर थायराइड हार्मोन का कब यूज कर सकते हैं अपन? ऑब्वियसली अगर आप में वो थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी है या फिर आपको थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर यूज्ड इन द हाइपोथायरॉयडिज्म. तो थायराइड हार्मोन्स दे आर यूज्ड इन द हाइपोथायरॉयडिज्म. आप यूज होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, राइट? एम आई ऑडिबल? यस. ओके. बट हाइपोथायरॉयडिज्म के इट इज बिकॉज ऑफ द टू कंडीशन. तो इन द चिल्ड्रंस hypothyroidism is that leads to cretinism, and in the adults maxedema. There is one more condition, maxedema coma, that is a medically emergency condition. उसमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, immediate treatment लगता है, right? So in that case hypothyroidism, that is a cretinism, maxedema coma. In that condition thyroid hormones are used. और वो उसका कौन सा थायराइड हार्मोन का एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, लियोथायरोनिन, लियोथायरोक्सिन. लियोथायरोक्सिन इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ योर T4. जो T4 है उसका लियोथायरोक्सिन क्या है? सिंथेटिक डेरिवेटिव. नाउ इंस्टेड ऑफ थायरो, है ना, इंस्टेड ऑफ टेट्राहाइड्रोथायरोनिन T4, तो लियोथायरोक्सिन इज अ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन दैट इज यूज्ड. इट इज प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स लॉन्ग हाफ लाइफ. जो नॉर्मल थायराइड हार्मोन होता है वो इजीली मेटाबोलाइज होता है, दैट्स वाई शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, उसका यूज नहीं होता है. So levothyroxine is used due to its long half life and reduced dose frequency. अगर उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है तो डोज फ्रीक्वेंसी कम रहेगा ना. एंड दे आर यूज्ड एज, किस में यूज़ करते हैं उसमें? दे आर यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी. रिप्लेसमेंट थेरेपी म्हणजे क्या? रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब अगर आप में उसमें कमतरता है, आप में आपके बॉडी में थायराइड की कमी है, उस टाइम पे रिप्लेस करना पड़ेगा. दैट इज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके. सो रिप्लेसमेंट थेरेपी इन केस ऑफ क्रिटिनिज्म. In case of cretinism, now cretinism जो है that occurs in the children's, okay, cretinism that occurs in the children's, and in that cretinism there is a deficiency of thyroid hormones in the children's. Now ये cretinism दो टाइप के होता है. cretinism may be either sporadic, may be either sporadic. cretinism दो टाइप का होता है. पहला कौन था? sporadic, and second one is a endemic. तो cretinism है ना,
क्रेटिनिज्म में भी आइदर स्पोरेडिक और एंडेमिक. नाउ स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? तो क्रेटिनिज्म में भी आइदर स्पोरेडिक और एंडेमिक. स्पोरेडिक मीन्स it is a in that sporadic cretinism there is a congenital absence or defective thyroid. तो बचपन से ही absence होगा, थायराइड ग्लैंड का प्रेजेंट नहीं है या फिर डिफेक्टिव थायराइड ग्लैंड है. that condition is known as a sporadic cretinism. And endemic cretinism मतलब that is due to because of the deficiency of iodine, severe deficiency of iodine, that leads to endemic cretinism. Okay, now in both cases, sporadic cretinism and endemic cretinism, we used to give levothyroxine. दोनों कंडीशन में क्या है? levothyroxine देना है पेशेंट को. तो डोज इज 10 to 15 microgram per kg daily, right? That will produce a promising result. क्योंकि क्रेटिनिज्म में क्या होता है? मेन टास्क आपको करना है, यू आर टू प्रिवेंट द मेंटल एबनॉर्मलिटी. क्योंकि क्रेटिनिज्म में क्या है? मेंटल एबनॉर्मलिटी डेवलप होता है एंड यू आर टू प्रिवेंट दैट. एंड इफ यू ट्रीट इमीडिएटली दैट क्रेटिनिज्म, so by using levothyroxine 10 to 15 microgram per kg per kg daily dose, that produces a promising result in case of mental and physical abnormality developed in the cretinism. ठीक है. Now second is a hypothyroidism. second use किस में कर सकते हैं? है ना, replacement therapy of this, है ना, this thyroid hormones used as a replacement therapy in case of cretinism and hypothyroidism. तो hypothyroidism adult में होता है ना, ड्यू टू रिड्यूस्ड थायराइड एक्टिविटी. अगर अडल्ट का रिड्यूस्ड थायराइड एक्टिविटी है, इन दैट केस अगेन दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय levothyroxine. So in the adult 50 microgram daily, that is a dose, and it is increased gradually every 2-3 weeks depending on the plasma thyroid stimulating and TSH level. प्लाज्मा TSH लेवल मॉनिटर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली डोज देना है. ठीक है. तो thyroxine or thyroid hormones, they are used as a replacement therapy in the cretinism, which may be either sporadic or endemic. Second, hypothyroidism, right? Now third is a myxedema coma. myxedema coma. तो myxedema coma क्या है? It is one of the serious condition. ये medical emergency condition होता है myxedema coma. In that again we have to use levothyroxine. लीवोथायरोक्सिन क्या है? देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है. व्हाट इज अ लीवोथायरोक्सिन? लीवोथायरोक्सिन इज अ सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक T4. जो टेट्राहाइड्रोथायरोन होता है उसका सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन है? लीवोथायरोक्सिन. मतलब T4 इज अ नेचुरल, बट उसका सिंथेसिस करके बनाया है तो उसको लीवोथायरोक्सिन है. दिस सिंथेटिक T4. लीवोथायरोक्सिन इज सिंथेटिक T4. ओके, दैट इज गिवन इन द myxedema coma 500 माइक्रोग्राम, है ना. और लिवो, है ना, लिवो एंड लिवो, एक में क्या है? ये लिवो, लिवोथायरोक्सिन, दैट इज सिंथेटिक T4, लिवोथायरोक्सिन दैट इज सिंथेटिक T3. और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, एक में ये लिवो है, एक में ये लिवो है. तो लिवो एंड लिवो, लिवोथायरोक्सिन इज अ सिंथेटिक T4 एंड लिवोथायरोक्सिन इज अ synthetic T3. So levothyroxine 1000 microgram is given. Along with that, corticosteroids are also used prophylactically, है ना. ये myxedema coma में यूज होते हैं. ठीक है, myxedema coma. Then also T3, T4 thyroid hormones are also used in again non-toxic goiter, है ना, increase the thyroid gland. Also used in non-toxic goiter. T4 is used to suppress the thyroid stimulating hormone production and decrease the goiter. थायराइड कार्सिनोमा में यूज कर सकते हैं. थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया तो T4 इज यूज्ड आफ्टर द थायराइडोक्टोमी. थायराइड ग्लैंड रिमूव करने के बाद में T4 यूज करते हैं. तो T4 इज यूज्ड आफ्टर सर्जरी ऑफ थायराइड ग्लैंड और रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्सिनोमा. देन अगेन in case of miscellaneous also T3, T4 thyroxine hormones are also having miscellaneous use. So these hormones, they are tried in refractory anemias. refractory anemia एक कंडीशन है, इसमें भी थायराइड हार्मोन्स का ट्राई किया है.
then also used in the infertility and non-healing ulcers. These are the uses of these thyroid hormones. Thyroid hormones कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना? तो either they are used as a replacement therapy, है ना, or they are used for the treatment of goiter, thyroid carcinoma and miscellaneous use. But as a replacement therapy, they are used in a cretinism, they are used in the hypothyroidism, they are used in the myxedema and myxedema coma, right? तो ये हो गए उसके यूजेस. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ ड्रग्स यूज्ड इन द हाइपरथायरॉयडिज्म. मोस्टली हाइपरथायरॉयडिज्म ये होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म रेयरली होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म रेयरली होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म रेयरली होता है. ये कंडीशन में हाइपो, दीज आर द कंडीशंस वेयर दे आर यूज्ड इन द हाइपोथायरॉयडिज्म. मतलब क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, मैक्सिडेमा, नॉन टॉक्सिक गोइटर, थायराइड कार्सिनोमा, मिसलेनियस. बट अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया देन हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स व्हाट? तो इफ देयर इज इंक्रीज्ड थायराइड लेवल्स ऑफ योर बॉडी, थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा है, तो इन दैट केस हाइपरथायरॉयडिज्म. तो व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड इन द हाइपरथायरॉयडिज्म, right? So drugs used in the hyperthyroidism, okay? So first class is a anti-thyroid drugs. First class is anti-thyroid drugs. So anti-thyroid drugs are of different types. Anti-thyroid drugs, so like a propyl thiouracil, then methimazole, carbimazole. These three drugs are very important. ये mechanism वगैरह अपन देखने वाले आज. Okay, these are the drugs which inhibit the synthesis of thyroid hormones. ये जो propyl thiouracil, thiamethazole है ना, methimazole, propyl thiouracil and carbimazole, methimazole, carbimazole, propyl thiouracil. These are the drugs which inhibit the synthesis of thyroid hormones. ये तीनों भी सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, ये अपन देखेंगे बाद में मैकेनिज्म वगैरह. सेकंड क्लास इज नथिंग बट द आयोडाइड्स लाइक सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूगॉल सॉल्यूशन. दे आल्सो प्रिवेंट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. ये क्या करते हैं कि रिलीज प्रिवेंट करते हैं. आयोडाइड्स विल प्रिवेंट द रिलीज, दिस ड्रग विल प्रिवेंट द सिंथेसिस. Then third class is nothing but the radioactive iodine. So it will cause destruction of thyroid follicular cells. ये क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन करेगा. Will cause destruction of thyroid gland. And then beta blockers, they are known as a fourth class. They are adjuvant drug. इनको अपन adjuvant drug बोलते हैं. क्यों? Because they are used to decrease the symptoms of hyperthyroidism caused by सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है एंड उसके कारण जो सिम्टम्स है उसको डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, राइट? तो दे आर नोन एज एडजुवेंट ड्रग. देन लास्ट ऑप्शन आपका है सर्जरी, रिमूव कर दो थायराइड ग्लैंड को. तो दीज आर द मेजर्स यूज टू ट्रीट द हाइपरथायरॉयडिज्म. अगर थायराइड हार्मोन्स आपके ज़्यादा है ना, तो उसमें दो तीन ऑप्शन है. एक तो आप थायराइड हार्मोन को, है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या भाई? हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स देयर इज इंक्रीज द थ्री हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. अगर आपको हार्मोन्स ज़्यादा हो गए थायराइड के लिए, तो आपको ऑप्शंस क्या है आपके पास? व्हाट यू कैन डू विद दैट. अगर आपके ब्लड में थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गए तो आप क्या कर सकते हो? लॉजिकली जस्ट थिंक अबाउट दैट. तो लॉजिकली थिंक करो, उसको क्या कर सकते हो आप? एक तो उसका सिंथेसिस होने मत दो, है ना. आप लॉजिकली थिंक करो ना, what you can do with that. So you can prevent the synthesis. How you can prevent the synthesis? By using anti-thyroid drugs. So you can prevent the synthesis by using anti-thyroid drugs. What are the examples? Propyl thiouracil, methimazole, carbimazole, right? Second thing, if you can't prevent the synthesis, what you can do? You can prevent the release. So iodides, they are drugs which prevent the release of thyroid hormone. If you can't prevent the synthesis, if you can't prevent the release, what you have to do?
you have to destruct the thyroid gland. You can destruct the thyroid gland. So radioactive iodine is used. Iodine 131 is used to destruct the thyroid gland. है ना? They will produce beta particles and gamma particles X-ray. They will damage the thyroid follicular cells. Thyroid hormone मिलेगा. If you can't destroy the thyroid gland, then you can remove the thyroid gland by using surgery. That is another measure. दिमाग लगाना है, सिर्फ ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा. You can remove the thyroid gland by surgery. And अगर वो ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके कारण जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो चुका है, उसको सिम्टम्स कम करने के लिए आपको बीटा ब्लॉकर्स यूज करना है. दैट्स इट. These are the drugs used in the hyperthyroidism. ठीक है. Now you can see over here. So again, what are the targets for anti-thyroid drugs? So what are the classes of anti-thyroid drugs? तो easily आपको समझ में आना चाहिए कि targets क्या है, classes क्या है, right? Some drug क्या करेगा? See. Okay. So thyroid hormones, they are synthesized in the follicular cells of your thyroid gland. ये क्या है? Follicular cells है, right? Follicular cells, they are synthesized, है ना? So first, for the synthesis of thyroid hormones, you need iodine. आपको मालूम है, आपको आयोडीन चाहिए थायराइड हार्मोन के लिए, है ना? आयोडीन एब्सॉर्ब होता है, आपको मालूम है ना? Iodine is absorbed from GIT, and that iodine is transported to a thyroid follicular cells by the one pump known as a sodium iodide pump, or known as a symport, sodium iodide or iodine sodium symporter. आयोडीन सोडियम सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर क्या बोलते हैं उसको, कि दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आयोडीन प्लस सोडियम. आयोडीन सोडियम, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, that pump is inhibited by some drugs known as a thiocyanate and perchlorate. These drugs are not used nowadays, but thiocyanate and perchlorate, they inhibit the sodium iodide symport and prevent the transport of iodine from blood to the follicular cell. फॉलिकुलर सेल में आयोडीन जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है पंप को. जो पंप है आयोडीन को लेके जाने वाला फॉलिकुलर सेल में कौन सा है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट. उसको ही इनहिबिट करके कौन करता है? thiocyanate and perchlorate, right? So if you can't, है ना, if you can't prevent the transport, अभी क्या होगा? आयोडीन क्या होगा? आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, है ना, peroxidase, है ना, thyroid peroxidase. आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय thyroid peroxidase to the iodide. Now iodide will be, है ना, iodide will join with the that hormone tyrosine. So iodine will join with the tyrosine, and the process is known as organification. The process is known as organification. Again, that is also catalyzed by thyroid peroxidase enzyme, है ना. And then उसमें आपको बनेगा मोनोआयोडोथायरोनिन, है ना. दो मॉलिक्यूल मोनोआयोडोथायरोनिन बनेंगे डाइआयोडोथायरोनिन, है ना. और एक डाइआयोडोथायरोनिन, एक मोनोआयोडोथायरोनिन बनेगा ट्राइआयोडोथायरोनिन, और दोनों डाइआयोडोथायरोनिन बनेंगे टेट्राआयोडोथायरोनिन. तो आपको ये T3 T4 बन गए, ठीक है. और ये स्टोर्ड किए जाते हैं किसमें? थायराइड ग्लैंड में, इन थायराइड ग्लैंड एज अ कोलाइड. और वो बाद में रिलीज होता है बाय एंडोसाइटोसिस, है ना. रिलीज होने के बाद में T3 T4, है ना, जो, है ना, T3 T4, है ना. और ये जो पेरिफेरल टिश्यू है, सीक्रेट होने के बाद में जो ब्लड है आपका, ये ब्लड में क्या होता है कि देयर इज कन्वर्जन ऑफ T3 into कन्वर्जन ऑफ T4 into T3, है ना. दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय सम ड्रग्स, ठीक है. दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय सम ड्रग्स. बट यहाँ पे क्या है कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, सम ड्रग विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्लड टू थायराइड फॉलिकल, दैट इज thiocyanate and perchlorate. Some drug will inhibit the synthesis, yeah. So example, some drug will inhibit the oxidation and organification of iodine with the tyrosine. These are nothing but the carbimazole, methimazole and propyl thiouracil. Propyl thiouracil, methimazole, carbimazole, these drug inhibit the organification. ये जो oxidation
और जो कपलिंग रिएक्शन होता है उसको अपन ऑर्गेनिफिकेशन बोलते हैं, है ना. दीज आर द टारगेट्स फॉर योर ड्रग. ठीक है. नाउ विल सी द इंडिविजुअल ड्रग्स एंड क्लासेस. We'll see one by one. First of all, you should understand how these thyroid hormones are synthesized. We have already seen, एक बार हमने ऑलरेडी देखा है कि थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के बारे में. फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ड्रग्स भी समझ में आना चाहिए. नाउ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एंड देयर एक्शन इफेक्ट्स ऑफ एंटीथायराइड ड्रग, है ना. मतलब देर आर स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स. पहला है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयोडीन इनटू ग्लैंड. मीन्स इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन और अपटेक ऑफ आयोडीन. यू कैन से अपटेक ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्लड टू द थायराइड ग्लैंड, है ना. तो प्लाज्मा में क्या है, आयोडीन जो आप खाना, आयोडीन जो भी आप डाइट में लेते हो, whatever iodine you are taking diet, that is converted into iodide in the GIT. आयोडाइड में कन्वर्ट होता है एंड दैट आयोडाइड इज एब्सॉर्ब. तो ब्लड में क्या है आपके, आयोडाइड है, आयोडीन नहीं है, आयोडाइड है. तो आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. सो आयोडाइड इज अपटेकन बाय, and iodine is uptaken by the thyroid gland by using the sodium iodide symporter. That is an active process, active transport होता है ये, and that is a because of the sodium iodide symport. So iodide is transferred into thyroid gland. Now thyroid gland में क्या होता है, iodide is, है ना, iodide is oxidized, iodide is oxidized to iodonium ion by using thyroperoxidase. Now iodonium ion will combine with the tyrosine, that is known as a, right, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन. एंड आयोडीनेशन जब होगा तो क्या बनेगा, मोनो आयोडोटायरोसिन, मोनो आयोडोटायरोसिन MIT ना. दोनों मॉलिक्यूल्स एक में के साथ में क्या बनेंगे, डाई आयोडोटायरोसिन. मोनो आयोडोटायरोसिन बन गया, दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होके बनेंगे डाई आयोडोटायरोसिन. और जब मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन कंबाइन हो गए तो बनेगा आपका ट्राई आयोडोटायरोसिन T3. और जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आयोडोटायरोसिन विल कंबाइन तो बनेगा आपका टेट्रा आयोडोटायरोसिन, मतलब T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन. एंड दीज रिएक्शंस आर नोन एज कपलिंग रिएक्शंस. दीज आर द स्टेप्स. सो एक्टिव accumulation of iodine into gland, so that is the basis of selective cell destruction, है ना. ये जो स्टेप्स जो है सिंथेसिस, एक्टिव accumulation of iodine in thyroid gland, that is inhibited by, or that is done by destruction of thyroid by using iodine 131 in case of hyperthyroidism, है ना. Then second step होता है oxidation of iodine to iodide, है ना. That is inhibited by थायोनामाइड्स, थायोनामाइड ड्रग है. देन थर्ड स्टेप जो है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन प्रोसेस. थायरोग्लोबुलिन टू फॉर्म अ मोनोआयोडोथायरोनिन, थायरोनिन एंड डाइआयोडोथायरोनिन बाय द एंजाइम पेरोक्सिडेज. सो दीज आर आल्सो इनहिबिटेड बाय थायोनामाइड्स. थायोनामाइड्स मतलब क्या, वही तीन ड्रग, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिमिजोल एंड कार्बिमेजोल. ओके. देन फोर्थ स्टेप क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग ऑफ मोनोआयोडोथायरोनिन टू डाइआयोडोथायरोसिन थायरोनिन टू फॉर्म ट्राइआयोडोथायरोनिन. ट्राइआयोडोथायरोनिन क्या होता है, T3, दैट इज 3-3,5,3- ट्राइआयोडोथायरोनिन. के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, टेट्राआयोडोथायरोनिन क्या है, व्हाट इज T4. T4 क्या है, 3,5,3-5 3,5,3-5 tetraiodothyronin. These are reaction catalyzed by peroxidase, thyroid peroxidase. Now this step is also inhibited by this thionamides. Thionamides क्या है, तीन स्टेप इनहिबिट करते हैं. Now fifth step क्या है, प्रोटियोलाइटिक रिलीज ऑफ T3 T4 फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन. तो थायरोग्लोबुलिन में होता है, और थायरोग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है. तो ये प्रोटीन में ही, प्रोटीन के साथ में होता है.
so it should be released by proteolysis, so that is inhibited by high dose of iodine. Conversion of T3 conversion of T3 नहीं, यहाँ पे T4 to T3, conversion of T3, conversion of T4 to T3 by deiodinase enzyme in the peripheral tissue, है ना, that is inhibited by propranolol also, propyl thiouracil also. तो ये स्टेप्स है, कितने स्टेप्स है सिंथेसिस के, है ना, आयोडीन का अपटेक होगा फॉलिकुलर सेल्स में, अपटेक, देन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू द आयोडीन, देन आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू, ठीक है, टू फॉर्म ए मोनो आयोडो टायरोसिन डायोडो टायरोसिन, उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन होगा. यहाँ पे T3 की जगह T4 है, T4 की जगह T3, ठीक है. और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे. सो ड्रग्स विच अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. पहला है आपका एक्टिव अक्यूमुलेशन ऑफ थायराइड, एक्टिव अक्यूमुलेशन ऑफ आयोडाइड इन थायराइड ग्लैंड, that is prevented by that perchlorate and perchlorate also. ये जो है कौन से, ये जो है thiocyanate and perchlorate, so they also inhibit the uptake. Okay, so active accumulation of iodine into the thyroid gland, that is inhibited by perchlorate and periodate, but also because of the iodine 131 destruction. Iodine 131 क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन एज ए सोडियम सॉल्ट दिया जाता है, दैट आयोडीन विल रिलीज एक्स-रे बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स दैट विल डिस्ट्रक्ट द थायराइड ग्लैंड. सेकंड, ऑक्सीडेशन, जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ iodide to iodine by peroxidase, that is inhibited by thionamides, that is propyl thiouracil, methimazole, carbimazole. Then थर्ड स्टेप क्या होता है, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, है ना, there is no organification to form a monoiodothyronine diiodothyronine by peroxidase. So again thionamides inhibit the peroxidase. फोर्थ रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, there is coupling of monoiodothyronine and diiodothyronine to form a T3, that is a triiodothyronine, that is a 3x5x3 triiodothyronine. बाद में coupling of 2 DIT, coupling of 2 molecules of diiodothyronine to form a T4, है ना, what is that, 3,5, 3-5 tetraiodothyronine. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, what is T4, और ऑप्शन में ऐसा आता है कि 3-5 है ना, और ट्राइआयोडोथायरोनिन, है ना, एक ऑप्शन में आता है 3- है ना, एक ऑप्शन में आता है 3,5 का 3 ट्राइआयोडो, एक ऑप्शन में आता है 3,5 3,5 ऐसा टेट्राइडो, और एक में अपोजिट ऑप्शन होता है, राइट. तो फिफ्थ स्टेप है प्रोटियोलाइटिक रिलीज ऑफ T3 T4 from thyroglobulin, that is inhibited by again high dose of iodide. And conversion जो है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, T4 का कन्वर्जन T3 में होता है पेरिफेरल टिश्यू में, that is inhibited by propranolol and propyl thiouracil, right. Now we'll see the individual drug. So anti thyroid drugs, again यहाँ पे देखो anti thyroid drugs, है ना. तो फर्स्ट क्लास क्या रहेगा आपका एंटी थायराइड ड्रग का, वही दोज ड्रग विच इनहिबिट द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. तो जो सिम्पोर्टर मतलब दिस इज अ सोडियम आयोडाइड पंप विच ट्रांसपोर्ट ए आयोडाइड इनटू द थायराइड फॉलिकल. जो थायराइड की फॉलिकुलर सेल से उसमें जो ट्रांसपोर्ट करता है आयोडाइड का, कौन करता है, दिस सिम्पोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. सो दैट सिम्पोर्टर इज इनहिबिटेड बाय सम ड्रग्स, राइट. जैसे
है ना. Iodine is trapped into the follicular cells by using this sodium iodide importer. Now this is inhibited by some drugs known as a thiocyanate, है ना, 2-borate, perchlorate, then perchenate and nitrates. These are the few drugs: thiocyanate, and fluborate, perchlorates, and perchenate and nitrates, but they are not used nowadays. Okay, so these are inhibited by this drug, and thyroid hormone synthesis is prevented. Thyroid hormone synthesis is prevented, right? तो आयोडीन का जो ट्रैपिंग होता है इन फॉलिकुलर सेल्स बाय यूजिंग सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर, दैट इज इनहिबिटेड बाय थायोसाइनेट्स, 2-borates, perchlorates, pertichenates एंड नाइट्रेट्स. ये जो कैटेगरी ड्रग्स है ये इनहिबिट करते हैं थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, दैट इज प्रिवेंटेड. ओके, बट दीज ड्रग आर टू टॉक्सिक एंड दे आर नॉट यूज्ड नाउअडेज, है ना. ये ड्रग क्या है? टॉक्सिक ड्रग है. दीज आर द टॉक्सिक ड्रग्स, दे आर नॉट यूज्ड नाउअडेज. थायोसाइनेट जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड, है ना. थायोसाइनेट जो है ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कैबेज. आप जो गोभी खाते हो, गोभी, उसमें ये थायोसाइनेट प्रोड्यूस होता है. ऑल्सो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग में भी थायोसाइनेट प्रोड्यूस होता है. एंड ऑल्सो सोडियम नाइट्रोफोसाइड, जो सोडियम नाइट्रोफोसाइड है जो आपका ब्लड वेसल को डायलेट करता है, दैट इज सोडियम नाइट्रोफोसाइड. कैबेज, सिगरेट स्मोकिंग, सोडियम नाइट्रोफोसाइड, they produce the thiocyanate and can cause hypothyroidism in a normal patient, है ना. आप अगर ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हो, ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, ज़्यादा सोडियम नाइट्रोफोसाइड का ट्रीटमेंट हो चुका है आपको, या फिर आपका कैबेज ज़्यादा खाते हो, तो दैट कैन लीड टू हाइपोथायरॉइडिज्म बाय इंक्रीजिंग द आयोडाइड इन द ब्लड, राइट. नाउ सेकंड क्लास ऑफ एंटी थायरॉइड ड्रग इज अ इनहिबिटर ऑफ थायरॉइड पेरोक्सिडेज एंजाइम. जो थायरॉइड पेरोक्सिडेज को इनहिबिट करने वाले ड्रग है, सो इनहिबिटर्स ऑफ थायरॉइड पेरोक्सिडेज, दे आर आल्सो नोन एज थायोनामाइड, है ना, थायोअमाइड्स. दे आर आल्सो नोन एज थायोअमाइड्स, आल्सो नोन एज थायोयूरेरिलेंस, थायोयूरेरिलेंस, है. तो थायोयूरेरिलेंस एंड थायोनामाइड, ओके, थायोअमाइड और थायोयूरेरिलेंस, दे आर नोन एज द इनहिबिटर ऑफ थायरॉइड पेरोक्सिडेज. ये थायरॉइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं एंड प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स. नाउ इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स, थायरॉइड पेरोक्सिडेज इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका. थायरॉइड पेरोक्सिडेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स. इट कैटलाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, देन ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन एंड कपलिंग रिएक्शन. फॉर ड्रग्स लाइक carbimazole, then methimazole, methimazole and propyl thiouracil. Carbimazole, methimazole, propyl thiouracil, they inhibit the enzyme iodine peroxidase, they inhibit the enzyme peroxidase, thyroid peroxidase, and these drugs prevent the formation of new thyroid hormone. ये क्या करेंगे? थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं होने देंगे. बट जो ऑलरेडी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस हो चुका है उसका क्या? क्योंकि थायराइड हार्मोन्स दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यू वीक्स बिकॉज दे हैव लॉन्गर हाफ लाइफ. T4 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 7 days अराउंड. तो जो स्टोर्ड हार्मोन है उसको कुछ नहीं कर सकती है, बट न्यू हार्मोन जो बनने वाला है उसको इनहिबिट करेंगे. दे विल प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ न्यू हार्मोन बाय इनहिबिटिंग द थायराइड पेरोक्सिडेज. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बिमेजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल और मिथिमेजोल? इसके ऊपर आ चुके हैं क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई these drugs has a lag period. This drug has a lag period of 1 to 3 weeks. ये जो ड्रग है उनका लैग पीरियड होता है 1 to 3 weeks, क्योंकि इतने में जो बचा हुआ ऑलरेडी जो स्टोर है बॉडी में थायराइड, तो वो एक्ट रहता है. नाउ दे आर आल्सो नोन एज इनहिबिटर्स ऑफ आयोडीनेशन एंड कपलिंग. ये ड्रग क्या करते हैं? आयोडीनेशन एंड कपलिंग इनहिबिट करते हैं, ठीक है. नाउ इनकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? Adverse drug reaction of these drugs, propyl thiouracil, carbimazole, methimazole, ठीक है. तो they can cause rarely मतलब 0.1% पेशेंट में they can cause serious adverse effect known as agranulocytosis. agranulocytosis मतलब क्या है? जो आपके ब्लड सेल्स है, WBC में 2 टाइप होता है ना, ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट्स.
ए ग्रैनुलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट मोनोसाइट होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं. तो दे मोस्ट दिस adverse effect is A granulocytosis and most common adverse effect is a maculopapular pruritic rash. मतलब ये आपके स्किन रैश करेंगे. आउट ऑफ दीज 3 ड्रग्स कार्बिमेजोल, मिथिमेजोल, कार्बिमेजोल एंड प्रोपाइल थायोरेसिल. आउट ऑफ दीज 3 प्रोपाइल थायोरेसिल जो है it has a high protein binding. This drug is safe in a pregnancy because ये ज़्यादा it is negligible or very less amount of this propyl thiouracil can cross the placenta and also not secreted or very less secreted in the milk. That's why it is safe in the pregnancy. इसका प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता ज़्यादा और मिल्क में नहीं आता है, बट बाकी दो आते हैं ना, कार्बिमेजोल एंड मिथिमेजोल. That's why they are not used in the pregnancy. Okay, normally hyperthyroidism in the pregnancy is also rare case, but if there is a condition then you have to use propyl thiouracil. Propyl thiouracil is less potent and having short half-life and also inhibit the peripheral conversion of T4 to T3. ब्लड में क्या है कि T4 जो बना है उसका कन्वर्जन T3 में होता है, बिकॉज एक्टिव क्या है, T3 इज एक्टिव फॉर्म. Now propyl thiouracil is a faster acting, है ना. propyl thiouracil drug is a faster acting. Carbimazole is a, है ना, longer acting. Carbimazole is a longer acting, but carbimazole is a prodrug of methimazole. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Carbimazole is a prodrug of methimazole. कार्बिमेजोल क्या है, लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है. प्रोपाइल थायोरेसिल क्या है, फास्टर एक्टिंग ड्रग है. कार्बिमेजोल इज अ प्रोड्रग ऑफ मिथिमेजोल. ठीक है, ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं क्वेश्चन. प्रोड्रग के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद मैकेनिज्म के ऊपर, इसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना. तो याद रखना है मैकेनिज्म एज वेल एज द प्रोड्रग का जो कंसेप्ट है वो. लैग पीरियड लेजी. चलो नेक्स्ट वन इज अ यूजेस. क्या है इनके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज थायोनामाइड्स. थायोनामाइड्स जो है इनकी यूजेस क्या है, मतलब प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बिमेजोल है ना, मिथिमेजोल, इनकी यूजेस क्या है. तो दे आर यूज्ड इन द थायरोटॉक्सिकोसिस. जहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गए वहाँ पे यूज़ करेंगे. ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना. व्हाट आर द यूज ऑफ दिस थायोनामाइड्स, थायोअमाइड्स. यूजेस ऑफ थायोअमाइड्स और इनहिबिटर्स ऑफ थायराइड पेरोक्सिडेज. ये जो ड्रग्स है इनकी यूजेस क्या है. थायोयूरेरिलेंस. They are used in the condition known as thyrotoxicosis in the patient with the Graves disease. तो Graves disease में क्या होता है कि इन Graves disease में क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है. क्यों, Graves disease में एक एंटीबॉडी बनता है. दैट एंटीबॉडी स्टिमुलेट्स द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसके कारण क्या होता है, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. तो Graves disease में थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, इंक्रीज द थायराइड हार्मोन, and to control that these thioamides are used. Okay, so treatment will last for from 1 year to 15 year depending on the case. Longer term treatment लगता है. Also used in the non toxic goiter. Propyl thiouracil जो है, it is a drug of choice in the hypothyroidism in the first trimester of pregnancy. जो propyl thiouracil है, that is a drug of choice in case of हाइपरथायरॉयडिज्म इन द प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो पहला 3 महीना होता है ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का. तो उसमें ये प्रोपाइल थायरोसिल इज ड्रग ऑफ चॉइस. फॉर अदर पेशेंट ऑफ दिस थायरोटॉक्सिकोसिस मिथिमेजोल इज प्रेफर्ड. ओके, आल्सो यूज्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड. Thyroid storm is one condition. Thyroid storm is also one condition known as a severe thyrotoxicosis.
इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, टैक्कार्डिया, आपका फेवरेट वाले नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, रेस्टलेसनेस, confusion, coma, finally death. So propylthiouracil and is used in case of thyroid storm, and for prophylaxis steroids can be used, है ना। तो ये हुआ यूजेस। और नेक्स्ट से थर्ड क्लास, ओके। फर्स्ट क्लास आपने देखा है सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर इनिबिटर, सेकंड क्लास देखा है थायराइड पेरोक्सिडेज इनिबिटर, थर्ड क्लास इज अ थायराइड हार्मोन रिलीज इनिबिटर्स, थायराइड हार्मोन रिलीज इनिबिटर्स, ठीक है, थर्ड क्लास। तो सोडियम, देन पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आयोडाइड एंड ल्यूगॉल सॉल्यूशन, मतलब सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ल्यूगॉल सॉल्यूशन। ल्यूगॉल सॉल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ल्यूगॉल सॉल्यूशन इज अ 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, मीन्स 5% आयोडीन इन अ 10% potassium iodide, that is known as a Lugol solution. Okay, so that is given as a 3 to 5 drops 3 times a day. Now ये जो है sodium iodide, potassium iodide, Lugol solution, they inhibit the release of hormone, and act as a thyroid constipating agent. Normally आपको constipation होगा है तो क्या होगा, आपका fecal matter बाहर नहीं आएगा, so थायराइड का कॉन्स्टिपेशन हो गया तो मतलब थायराइड हार्मोन बाहर नहीं आएगा, तो दे इनिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड एक्ट एज थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट। दे आर द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग, ये जो है फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग है, एंड दे कॉजेज द श्रिंकेज ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिक्रीजेज द ब्लड वेसल्स, वैस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, एंड दे आर यूज्ड फॉर द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। अगर थायराइड का प्रिपरेशन करना है तो उसके पहले ये ड्रग देते हैं, है ना, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड स्टॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर आल्सो, है ना, जो है ल्यूगॉल सॉल्यूशन इज आल्सो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंड दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द गोइटर। लिथियम जो है, लिथियम आयन, लिथियम कार्बोनेट, दे आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड कॉजेज द हाइपोथायराइडिज्म। लिथियम भी इनहिबिट कर सकता है थायराइड हार्मोन का। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इनके, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूगॉल सॉल्यूशन के, दे कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ लिप्स, आपकी जो लिप्स है वो स्वेल करेंगे, एंजियोएडिमा, दे कैन कॉज फीवर, जॉइंट पेन, पेरिफेरल, है ना, पेटिशियल हेमोरेज, आल्सो कैन कॉज फ्लेरिंग अप रिएक्शन इन द एक्ने, फ्लेरिंग अप एक्ने इन द एडोलेसेंट, मतलब क्या है कि आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स भी आ सकते हैं ना। क्रोनिक आयोडाइड ओवरडोज कैन लीड्स टू कंडीशन नोन एज आयोडिज्म। ज़्यादा क्रोनिक आयोडाइड अगर लिया तो आयोडिज्म एक सिंड्रोम होता है, इसमें आपको सिम्टम आएगा मेटालिक टेस्ट, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, बर्निंग सेंसेशन इन द अपर जीआईटी, मतलब थ्रोट, है ना, इसोफेगस, स्टमक तक, माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, ठीक है। दैट इज अ ड्रग्स दैट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। पहला क्लास कौन सा था, ड्रग विच इनिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड टू द थायराइड फॉलिकल नोन बाय इनिबिटिंग द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये जो पंप होता है उसको इनिबिट करने वाले ड्रग देखे आपने, है ना, थायोसाइनेट, परक्लोरेट, है ना, ये। देन सेकंड क्लास देखा है कि थायराइड पेरोक्सिडेज इनिबिटर, जो कार्बेमेज़ोल, प्रोपाइलथायोरेसिल, मीथेमेज़ोल, these drug thiamides, they inhibit the thyroid peroxidase. थर्ड क्लास देखा है ड्रग विच इनिबिट द रिलीज, जो रिलीज इनिबिट करने वाले, रिलीज नहीं होने देंगे थायराइड हार्मोन का, जो सोडियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ल्यूगॉल सॉल्यूशन है। फोर्थ क्लास इज नथिंग बट द ड्रग एक्टिंग बाय डिस्ट्रक्टिंग द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन करते, जो थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन करते। बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक, तो फोर्थ क्लास इज ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ड्रग डिस्ट्रक्टिंग द थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन ही कर देंगे तो हार्मोन्स की नौबत में आएगी।
हार्मोन्स की नौबत नहीं आएंगी। तो व्हाट आर द ड्रग्स? तो रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो वहाँ पे क्या यूज होता है? रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो ड्रग दैट डिस्ट्रक्ट द थायराइड ग्लैंड, तो ड्रग इज नथिंग बट द रेडियो एक्टिव आयोडीन, फोर्थ क्लास, ठीक है। So iodine 131 is the most commonly used. Iodine 131 क्या है? It is an isotope of iodine which emits the radiation. So most commonly used is a iodine 131 which is having half life of 8 days. इसका 8 days half life होता है iodine 131 का, ये commonly यूज होता है। बट मोस्ट स्टेबल आइसोटोप जो है दैट इज 128, iodine 128 is मोस्ट स्टेबल। तो ये जो आयोडीन के आइसोटोप्स है दे आर गिवन है ना एज अ सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट है ना, सोडियम आयोडाइड जैसे, बट आयोडीन कौन सा रहेगा? 131 सोडियम सॉल्ट, दे आर गिवन एज अ सोडियम सॉल्ट। दे गेट्स एब्सॉर्ब ओरली and gets concentrated into the thyroid gland where they emit X-rays, gamma rays and beta rays। तो ये जैसे ही थायराइड ग्लैंड में जाएंगे वहाँ पे रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या करेंगे? ये पार्टिकल्स इमिट करेंगे, मतलब एक्स पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, मतलब ये रेज रिलीज करेंगे। एंड दे दिस रेज पेनिट्रेट अराउंड 0.5 mm into the thyroid tissue and they destroy the thyroid tissue, means destroy the thyroid gland। मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि these drugs after absorption they get concentrated into thyroid gland and they releases the that beta particle, gamma particle, X-ray particle and that causes the damage to the follicular cells, ठीक है, destroy the thyroid। Concentration of radioactive iodine is है ना, concentration of radioactive iodine in the thyroid is responsible for the reactive thyroid destroying। उनकी यूजेस क्या है? It is used as a used in the hyperthyroidism mainly for the patient older than 35 years। मतलब जो 35 years के पेशेंट है उसके बाद के जो पेशेंट है ओल्ड है उससे ज़्यादा उसमें, क्योंकि वैसे भी हाफ लाइफ जी चुके हैं ना वो। हाइपोथायरॉइडिज्म मेनली पेशेंट ओल्डर देन 35 years, those with a disease and other contraindication। मेन ड्रॉबैक इन केस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म इज द है ना, ये जो बिकॉज ऑफ दिस मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस ड्रग, मतलब ये जो आयोडीन रेडियो एक्टिव है उनका ड्रॉबैक क्या है कि द हाइपोथायरॉइडिज्म कॉज्ड बाय दिस ड्रग इज अ परमानेंट। डिस्ट्रक्शन करेंगे तो थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा ना, एंड पेशेंट रिक्वायर्स थायराइड हार्मोन लाइफ लॉन्ग। is not suitable for young children in a and also in a pregnancy। ये not suitable for young children and pregnancy। ये जो radioactive iodine है it is not suitable for children and pregnancy। Now next class is nothing but the last slide है। तो next class देखो, नेक्स्ट क्लास इज पेरिफेरल कन्वर्जन जो है T4 to T3। सो इनिबिटर्स ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, ड्रग्स विच इनिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। तो ब्लड में क्या होता है? T4 इज कन्वर्टेड टू T3। सो ड्रग्स लाइक अ प्रोप्रानोल, प्रोपाइलथायोरेसिल inhibit the peripheral conversion of T4 to T3। T3 is more active than T4, ठीक है, याद रखना है कि triiodothyronine is more active than tetra। तो propranolol, propylthiouracil they inhibit the peripheral conversion of T4 to T3 by inhibiting one enzyme known as a 5-deiodinase, 5-deiodinase, and they are used in the hyperthyroidism। few other drugs are also there, जैसे amiodarone है also inhibit the, and there are few other 2-3 drugs inhibit the peripheral conversion and can cause hypothyroidism ना। 6th class जो है they are known as adjuvant drug। 6th class जो है they are known as adjuvant drug ना। what are their uses? to block the sympathetic effect of thyroidoxicosis। थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गए
उसके कारण जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है. Thyrotoxicosis induced symptoms like tremors, bradycardia, palpitation, anxiety. These are the symptoms induced by thyrotoxicosis due to sympathetic GPAT. Sympathetic GPAT कारण ये होता है. तो to block the sympathetic GPAT, we use a beta blocker like propranolol, atenolol, esmolol, calcium channel blocker जैसे diltiazem is also used. Methylprednisolone intravenously दे सकते हैं, है ना. और ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ना. थायोनोमाइड्स क्या है? थायोनोमाइड्स में तो कौन से ड्रग आते हैं? प्रोपाइल थायोरेसिल मेथिमेजोल, है ना. ये इनहिबिट द दैट एंजाइम थायराइड पेरोक्सिडेज. बट इन एडिशन टू दैट प्रोपाइल थायोरेसिल जो है also at higher doses inhibit the 5-deiodinase. यहाँ पे देखो, both can cross placenta, but propyl thiouracil is safe in the pregnancy and used in the uncomplicated hyperthyroidism. Common adverse reaction अपन ने देखा है. Iodide जो सेकंड क्लास है वो क्या करते हैं? They prevent the release of thyroid hormone, है ना, and decreases the size of gland fragility and vascularity. So they are not used long term because thyroid gland escape from this effect. They are used in thyrotoxicosis. This will end the drugs used in the, है ना, this will end the anti-thyroid drugs. इसमें किसी को डाउट है तो पूछो आप. If anybody has doubt in this, they can ask. इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई हैव टू एंड. ये 1 hour ही था. टुमारो विल सी दैट ड्रग्स रिलेटेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स. जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, टुमारो विल सी दिस थिंग्स, जैसे डिफरेंट ये देखेंगे. और बाकी और भी नोट्स निकाल के पढ़ूंगा, है ना. जो बाकी मेन जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स है फार्माकोलॉजी में, वो एक लेंगे. तो सी यू टुमारो. पेरिपेरल कन्वर्जन ड्रग नेम. पेरिपेरल कन्वर्जन कौन प्रिवेंट करता है? प्रोप्रानोलॉल करता है. बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलॉल होता है ना. प्रोप्रानोलॉल इज देयर, प्रोप्रानोलॉल. उसके बाद में अमियाडारोन होता है. उसके बाद में, है ना, अपने प्रोपाइल थायोरेसिल भी एक है. और दूसरे एक दो एग्जांपल है. मैं एक बुक है उसमें दिया है, मुझे याद नहीं रहा वो बुक का नाम, तो मुझे मालूम है. मैं चाहे तो आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ. जस्ट मिनट. ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बुक का ग्रुप में, या फिर कल दिखा दूंगा. ठीक है, तो विल सी यू टुमारो. बट आपको अभी याद रखने के लिए प्रोप्रानोलॉल एक है, दूसरा है अमियाडारोन, और तीसरा है प्रोपाइल थायोरेसिल. ये तीनों याद रखो, दैट इज इनफ. तो सी यू टुमारो.